attachments हो सब चीजें जुड़ी। So this will be the new console और ये बिल्कुल जिस तरह ड्रिप सेटिंग लगता है सामने लग जाएगा और आपका जो है सारा कंट्रोल जो है हाथ में आ जाएगा। So if you are thinking of it and planning for it, obviously इसको भी आपको बता देंगे but you know once you know this और सारा कुछ पता है it becomes very easy to do that. So if you are planning for it, just wait for it and just correspond with the Boston Scientific and Resources people. You should be fine this. आजकल वो मेनू का वो हैंड वाला जो ना आ रहा है। तो इधर this is the Rota Pro. This ये Rota Pro आ रहा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बेसिक्स आपको यहाँ हमने करा रहे हैं और सब कुछ but once you know this so this is very damaging. वो सारे आपके फुट कंट्रोल्स जो है वो सारे इधर आ जाएंगे. This is actually less bulkier, but the problem is it's so available नहीं और every institute has to then switch to this and obviously this will be costing something. तो obviously what are the indications, you know, अभी we are doing it. आपको basics की पहले slides समझेंगे कि basics. So basically what do you mean by that? Where is it indicated? Where is contraindicated? And basically it's a plaque modification. लोगों का ख्याल होता है कि थोड़ा plaque जो है वो उसको cut कर देंगे. No, it's just a plaque modification. Institute of Cardiology from Mumbai. So Dr. Arslan Masood, he is head of Department of Cardiology from Jinnah Hospital. I am Professor Zubair Akram. I was at Jinnah Hospital just retired last month and directly I am the President of Rotational Atherectomy. Then I'm with Dr. Ahmed Muki. So we have been doing it over the years now and I'll invite first of all Dr. Badr to give you the basics. Uske baad troubleshooting, tips and tricks, we'll carry on with that at Islam. Once we have done with it, then we'll bring you to the console and we'll tell you what optics. Thank you, sir. Thank you. It will be cut by this rota bar. So this is the phenomena of differential cutting. There are two important things of this rotation. Number one, the bar and the wire. Now, available here are 4 bars in Pakistan, 1.25, 1.5, 1.75 and 2. There are bars of 2.15 and 2.25 as well. There is difference in the shapes of 1.25 and the rest of them. Because when it will go in, it will do the atherectomy is being done. But when it's pulling out, it's not doing atherectomy, it has to come out. The 1.5, 1.75 and 2 has a shape like this, it's pointed, it will come out easily. The 1.25 does not have this shape, so it's stuck. So that's why in the initial stages, in the initial few cases, what the proctor says, go for 1.5 in Pakistan straightforward, keeping in mind the size of our vessels. Now the wire, 2 types of the wire, it's a floppy wire and the extra sport wire. Now as you are all will be aware that this is not the difference in the radiopaque portion of the wire. The radiopaque portion or the quality of the radiopaque portion is same in both these two. This is the difference in the shaft of the wire. To give the support, just is the difference between BMW and BHS. Okay, so to give the support, it's not the difference in the tip load force or the radiopaque portion of the wire. It's just the difference in the shaft of the wire. So mostly we use the floppy wire, but in case of the posterior liens, in case of the proximal liens, in case of the tortuous lien, we'll use the extra support wire so that the whole system should not come out when we are moving forward the wire. So basically, this is the whole system of this bulb. It's coming in its attached system. The bulb. Everything is right. When we'll come on the hands-on, I'll tell you about the different parts of it. Okay, why we have to go for rotablations? In calcified liens, when we are putting stent, there are chances of under-expansion, there are chances of malapposition, there are chances of strut fracture, and if we say no, we have to do expansion and we use NC, there are chances of perforation as well. So, and there are sometimes difficulty of passing the balloon or crossing the lien with the balloon or the stent. So all these things, life is easy, with this rotablation in calcified liens.
I hope you are all aware of the angiographic calcification of calcified lesion. You cannot see mild, in which you cannot see any radiopacities. In type B moderate, you are seeing the radiopacities, but it is on the one side. While angiographically, we are seeing two-dimensional view. On upper wall of the vessel and the lower wall of the vessel. Okay, if you are seeing on the one wall, it's type B, it's moderate, and straight if you see the pram track appearance. So it's on both sides of the vessel. So this is the diagnostic modality of choice, at least here in Pakistan at the moment, because most of the centers, they have IVUS, they don't have OCT. So there is a classification of IVUS, and it is according to the arc of calcium. So this is the whole arc of calcium. Okay, this is the arc of calcium. So this is the. I hope you will be aware that the ultrasound waves cannot cross the calcium. So you cannot say that there is thickness of the calcium is there or not. Yes, you can predict the length of the calcium, which is also important. So once the calcium is there, you cannot tell what is behind this. So intimal calcium, which in our word, in IVUS we'll say it is superficial calcium, or the adventitial calcium, it is the deep calcium. We can treat by rota, we can treat the superficial calcium. We cannot do anything to the adventitial calcium. I will to universal lithotripsy in case of that is for the development short way. Optical images बड़े अच्छे उस पे optical जो under expanded regions थी before that I will. So for the deeper ones वो जो differential cutting का जो concept दे रहा था you think like that we are using 1.5, 1.75. What it means is that, let's say if it's eccentric plaque, so it would just differentially induce a trauma or whatever. It's just the differential cutting of the person. It's just like the concept is just like a razor. The razor doesn't cut your skin; it just cuts out your hair. Because वो आगे निकल रहे होते हैं, they have different consistency compared to the skin. रोटा भी इसी तरह calcified spurs है, उनको शेप वगैरह करना है, उनको कट करना है, उनको थ्री बनाना पड़ेगा, elastic tissue है. Sir, one question. Can we define angiographically this superficial and deep calcium without doing IVUS? Just some consultants mean Eccentric or concentric, but obviously ideally it has to be the imaging, which tells you. Well, roughly if you operate immediately touching that, it means roughly you can say it's superficial. But definitely the of choice is OCT basically. IVUS can say if it is intimal, but we cannot say after what is beyond that when there is calcium. Because different centers apart करते हैं OCT versus IVUS. We have got financial constraints, so obviously for us we always advise that if you want to have one, it has to be IVUS. Because it gives quite a bit of information, and obviously especially for this left vein and that's cumbersome to perform. ठीक है ना, और प्लस ये कि आपका जो high risk cases में left vein related obviously इसके लिए तो आपको IVUS ही चाहिए. So इसलिए आप ज़्यादातर sectors में देखें only few have this OCT. Although that is better for calcium and the spontaneous cornea under dissections or whatsoever, and the dissections OCT, but IVUS does almost all the tasks. So here is another angiography classification of calcium, we can say that. So if on the IVUS there is calcium and its superficial calcium is more than 270 degrees, okay, now for each of these four we can add 1 point to this. Like if there is more than 270 degree of calcium in the length of more than 5 millimeter, we will add 1 point. If it is 360 degree calcium, okay, like more than 270 it's going to 360 another. Now calcified module, this is something that as sir is talking about, it is something very, very important. Because angiographically you see a small nodule, you can say, okay, no, you can do it easily. This is the nodule that can cause perforation. This is the nodule that can actually cause very, very, very difficulty in crossing the lesion and crossing the balloon. So it has, and again the vessel diameter. When the vessel diameter is small, okay, then will be the sort of picture. Again, in that case, also microcatheter would be helpful, like turnpike, like another Corsair. They are very helpful in tractability.
through the lesions. Now, this is a flow chart for the selection of patient. Like it is, if there is calcification, first of all, we'll see whether it is a functionally significant stenosis or not, like more than 70%, or there is ischemia non-invasive test, or FFR is significant. If nothing like there, then it's straightforward medical treatment. Okay, because we are doing rotablation with some risk factors. It's not like this that we are doing rota when it is not indicated. It should be indicated. It should be a weigh and balance. And on this weigh and balance thing, the benefit should be far more than the risk. So if it is there, then we'll see the disease complexity. According to the syntax score, according to the left main disease, with comorbidities, if there is indication of surgery, then go for surgery. If these are low, then go for PCI. And see the angiographic calcification there. For moderate, go for IVUS and OCT and confirm that this lesion needs to be addressed through rotablation. In severe cases, yes, rotational or orbital atherectomy needs to be done. So I like to come on the steps of this. Important things are, if we are doing left main osteolarity or RCA dominant or SERC dominant, always pass the sheath for teaching. Few centers, they even place the lead in line. They do not place, but place the lead in line before doing dominant RCA or dominant SERC. So, because there are chances with first run, when there will be debris going on, producing some slow flow, there will be complete hard block. So, to prevent something going in the adverse situation, so beforehand we will think of putting this, and the hemodynamic support as well. Again, appropriate burr size. Well, there is a formula of 0.5. Vessel diameter to burr should be should be equal to 0.5. Initially it was like 0.6 or 0. But now we have a conclusion of 0.5. But roughly in Pakistan, initially few cases go for 1.5, straightforward. Okay, it will be enough for your, I think, 99% of the cases. Engagement of target vessel, it is very important. By this, we mean if we are doing left main, we have seen that even in our initial training of session, this intervention, what fellows do, even if it is not properly intubated, they try to cross the vein and it happens. But in rotablation, if the vessel, if the ostium is not properly intubated, everything will be pull out. Okay, you will push the rota and you will pull out. So there should be proper intubation of the guiding catheter in the left main or RCA. Wiring the lesion is very important. That it should be wired properly. Because the rota wire is a poor crackable wire, because it's only stainless steel. It's not the needle coating in it. That's why we'll first use the workhorse wire, place the workhorse wire in the distal vessel, use the microcatheter, and then exchange this workhorse wire with the rota wire just to place there. Because the needle nail will not allow burr to rotate, whereas the stainless steel will allow it to rotate. But the stainless steel is very dangerous for perforations and dissection and a very poor trackable wire. Administer vasodilator. If there is spasm, it can increase the chances of dissection and perforation, because now the effect of the phenomena of differential cutting will be lost in case of spasm. Prepare rotablator. Okay, when we'll do the hands-on, I'll tell you all the steps how we'll prepare the rotablator. Deliver burr proximal to the lesion. It is also important. Proximal to the lesion means when you take the burr, there should be a take-off area, and this take-off area should be healthy. When you do the rotations, you will start from the healthy area so that it should not stuck in the lesion. And rotational atherectomy, when we do this, we'll say how the RPM are adjusted. After doing rotation, we'll remove the burr. While removing the burr, it is very important that you keep the wire there. Initially, it seems very difficult because it's 320 centimeter. Normally, we are in habit of using 180 centimeter of the wire. It's short wire. It will be a long wire. You will be needing an assistant there. So, when you are pulling out, be very careful that after rotablation, your wire should not be out, because there are dissection. It would be a very difficult thing to rewire after rotablations. So, keep your wire there. Immediately removing the rota, check angiographically what we have done.
rule out any perforation, rule out any slow flow, no reflow, and see the effectiveness of your atherectomy. Then we replace the rotawire with a workhorse wire, and again, it's like a normal angioplasty. We'll balloon with the NC, place the stent, NC the stent, and take out the system. So I said something about bud size. So bud to artery diameter should be equal to less than 0.5. So suppose if it is 3, the 1.5 will be fine. So if it is 3.5, even then 1.5 will be fine. I told you about the engagement of the target vessel side. It should be coaxial. An important thing is avoid pressure damping. Why we should avoid pressure damping is, why should not be there? There is proper engagement on one hand, but there should not be pressure damping. By pressure damping, we mean that there is no flow of blood. Whatever, when this atherectomy is being done, there is small particles. If there is no flow of blood, they will also stay there, and they will not be cleared from the vessel, and then there is slow flow and everything. So there should not be pressure damping. There should be some blood flowing through the vessel, so that all the debris and everything should be cleared into the vessel. Side holes, the medical program. I don't have any evidence for this, but I think should not be done. Side holes in medical. नहीं बनाना चाहिए. वो आपको false जो है वो tend to misguide. Misguide, yes. कोई भी alignment होगी तो फिर वो against the wall में ना मतलब Never worked in Rotawire as well, you know. एक ज़माना था side holes का, you know, you can get to a smaller diameter side, but with good techniques you just push the wire in the so that. But यहाँ तो आपको एक अच्छा support की ज़रूरत है definitely. और दूसरी बात ये कि कोई जिस तरह से कहा कि there should be no flow नहीं होना चाहिए, तो obviously you have to select which artery to go for, you know. और 0.5 क्रॉस ने क्या किया, the artery size का 0.5 भी आपने, obviously the rota is not there for something like 2.5 से नीचे के vessel size में नहीं आते होगा. So you have to just select the patient, the anatomy, the sizing. But obviously if it's there, it has to be acquired and a good support, no doubt. Call me. Otherwise ना वो support करता है. Atherectomy से start with the दो concept थे. One was initial concept was deep bulking strategy. जिसमें you try and deep bulk the atheroma node. Atheroma जहाँ पड़ा हुआ है उसको bulking कम करते हैं. तो with time it was associated with more complications and lesser added benefit. उसके फिर आहिस्ता इस strategy पे आके plaque modification. Deep bulking उसकी होती है आपकी जब आप बर्थ साइज लेते हैं 0.7 to 87 या आरटी के बराबर के सेट दे रहे हैं अटेम्प्ट किया इसको खत्म नहीं करते हैं उसमें कॉम्प्लिकेशन रेट भी बढ़ते हैं नो फ्लो परफोरेशंस और एडिड बेनिफिट कोई नहीं इसका काम सिर्फ है प्लाक को मॉडिफाई करना कैल्शियम को तोड़ देना क्या Proper stent expansion एक्सपेंशन के लिए आपकी trackability सही हो प्लाक मॉडिफिकेशन इज द थिंग टू टारगेट नॉट डीबगिंग स्ट्रेटजी और मैक्सिमम 0.7 से तो नीचे गए try to be 0.5 3 की वैसे 1.5 cover. Again, as already mentioned, microcatheter cost you like around 1 lakh 10,000 to 1 lakh 20,000. If it's not a very tortuous, not a very tough DM, we use OTW balloon. So it works like a microcatheter. It helps you delivering the rotawire, and OTW costs around 30,000 to 35,000. So you can use OTW balloon to replace the workhorse wire with the rotawire. Before getting into rotation, just try to exchange OTW use करें. चला जाता है जब आप उसको निकाल रहे होते हो normal length of wire के साथ, तो वायर को भी साथ ला सकते हो. So you should learn the technique of tracking the wire. I think this is very important. How many of you know how to track the wire? Almost all. मतलब जो नहीं obviously you know what he's telling is obviously it's a stainless steel wire. CT में case of we attempt, you know, and we are able to get through this rotawire. But if there are any bends or whatsoever, you know, then it's become very difficult. और खास तौर पे अगर heavily calcified हो और आपके लिए जो है tight है, but never try. Always go with a workhorse wire. A workhorse wire जो है combination वाला है उसके साथ आप चले तो गए. Once you are there, you know, कई लोग जो है to start with जो है वो it's better कि आप microcatheter में पहले ही लोड करके ले जाओ क्योंकि otherwise you know microcatheter की लेंथ और push the wire and ultimately आपको जो प्रॉब्लम पड़ती है कि तो wire आपके हाथ चल जाते हैं just blindly आप इसको करते हो
तो माइक्रो कैथेटर के साथ या OTW बैलून के साथ आप चलेगा, आपकी नॉर्मल वायर आ गई, ठीक है? So now you have crossed the layer. That is the first thing. And अब how to exchange with the rota wire? उसकी 320 है, but obviously now इसके 160 के करीब है, 180 के करीब है. अब उसमें ये है कि what you do is कि आप उसको pull back करोगे और OTW बैलून जब माइक्रो कैथेटर को with the upper wire in the purpose, ठीक है? तो आप जब उसको push करोगे आप, तो जब when pull it back, तो जब गाइडर के अंदर आ जाता है, तो then you just तो देयर विल बी अ टाइम कि आपके पास जब माइक्रो कैथेटर वापस आ रहा है, खत्म हो जाएगी, वायर खत्म हो जाएगी, वो उसके अंदर चली जाएगी, क्योंकि ओवर द वायर सिस्टम है. then you आप उसी जो मेरे फोल्ड जो साइड फोल्ड से आपके उसके अंदर से विदाउट वायर कनेक्टर के अंदर से जो है आप वायर कनेक्टर से आप कन्वर्ट लेकर विदाउट बीइंग ऑन द वायर, विदाउट वायर भी आप कर सकते हैं. like just at the tip of the guider आप पूरा just create कर दें. usually ask for a 2.5 at least balloon. 2 कभी कर देते हैं, but 2.5 is better. और उसके बाद आप उसको कर रहे हैं, then you can just pull it back. So that's a bit good. और इसी तरह से जो आपने उसको exchange करना है, you can always exchange. एक छोटी सी मैं करता हूँ इसमें सेक्शन कि हम बात कर रहे हैं कि रोटा वायर से पहले हम वर्क फोर्स वायर करें. मैनी ऑफ टाइम आपका लीड अप होता है, वर्क फोर्स वायर नहीं काम करेगी, तो यू कैन यूज स्पेशलाइज्ड सिटी वायर एज वेल. टफर वायर भी यूज बिल्कुल भी. बट द थिंग इज कि उसको बाद में आपको फिर exchange करना रोटा वायर से exchange करना. इट्स नॉट अच्छा, और सबसे बड़ी बात ये है कि जहाँ आपको चैलेंजिंग सिचुएशन लग रही है, नेवर ट्राई विद अ रोटा वायर, क्योंकि एक दफा रोटा वायर जो है ना उसका बेंड आ गया, किंक आ गया, किंक आ गया ना, तो इट्स ऑल एवरीथिंग इज लॉस्ट. बड़ा इजीली किंक होती है और बहुत इजीली किंक होता है, सॉफ्ट होता है. उसकी तो पहली बात है 320 है, आपके साथ दो, यू कैन जस्ट यू कांट होल्ड अलोन, इट हैज टू बी 2 और 3. यूजुअली आप तो 3 बंदे लेके चलते हैं, फिर खास पे जब ड्रीम कर रहे थे तो 2 भी कम पड़ जाते हैं. सो यू नो इसकी टिप जो है जस्ट लाइक अ BMW, बट पीछे जाके जो है देयर इज ऑल स्टेनलेस स्टील और बहुत आसानी से किंक हुए. सो नेवर ट्राई इन अ डिफिकल्ट एंट्रीज, और खास तौर पे अर्ली कोर्स में आप नेवर ट्राई. अदरवाइज बार आपको साइड में पड़ा होगा, आपकी वायर अगर आपने थोड़ा सा भी किंक आ गया ना, देन इट्स लॉस्ट. तो बदल पिक्चर दिखाई थी, अगर आप नोट किया हो कि हमारी जो नॉर्मल कॉर्डी वायर है यूजुअली दे आर 0.14 इंचेस डायमीटर शाफ्ट में, 0.14, दिस इज 0.9, 14 से भी कम है, 5 काफी पतली है, स्टेनलेस स्टील है, इजीली वेरी इजीली किंकेबल और जाया होती है. यू हैव टू बी केयरफुल कि उसमें छोटे लूप्स ना बने, कहीं पे बेंड ना आ जाए, बट ये आपको दिखाते चेंज हैं करनी पड़ेगी. जो आपने लूप्स भी आपने छोटे लूप से बनाए, बड़े लूप्स बनाए, देयर इज अ टेंडेंसी के और बिल्कुल माइनर सा किंक में जो आपने प्रॉब्लम क्रिएट कर दो. तो कहते हैं दूसरा निकालने का एक तो बैलून है, दूसरा जो है वो सिलेक्ट मिले तो प्राइस की से जो उसकी कंट्रास्ट है. तो अभी वो ऑब्वियसली वो सेलिंग सर, बट यू नो लेकिन मतलब वो जो है वो हर वक्त डिवाइस डिफरेंट. मैं कह रहा हूं वो हर दैट इज मॉडिफाइड नेटोस टेक्निक एक्चुअली. उसमें कई लोग जो इन्फ्लेशन लगाते हैं उसको करते हैं. क्रैपिंग इज द बेस्ट टेक्निक. इन्फ्लेशन लगाए जाते हैं, बट ये 100% टाइम्स वो काम नहीं करते. So tracking is the best. इवन एक्सटेंशन में यूज कर सकते हैं. Wire extensions. Yes, actually that was trapping से पहले जो था, और wire extension was the best thing. So when after everything is being, I mean we have this taken off the rota bar, but we have not put in the Y connector of the catheter. It's outside the catheter, and we have connected everything on the console, on the link. But then we will check the draw. For these dripping, there is a solution which normally we use. It's international. It's Rotaglide. It's not available here. So what we, at least in Punjab, तो हमारे पास available नहीं. What we do, we put nitroglycerin, we put heparin, we put rapamycin in it, and then we make a solution. And this solution should be continuously dripping through the tip as well as through this link, so that it should be air-free. Number one. Number two, there should not be any friction in the movement of. There should not be generation of any heat, and the movement of rota bar on this wire, there should not be any friction. Then rotation outside the body. You will check the rotation first on the dynamic light and then on the rota bar. For the rotational atherectomy, use 140 to 160 RPMs.
this is the safest. Initially 40, 50 patients do like 150, 160 and that's all. With more complex lesion, with more force required, you can go up to 20, 2, you can go to 2.5, but don't do it in initial cases. If the speed will be slow, then it can start. So it should not be less than 130. It should be around 140. And by rule, when you change the mode from your foot pedal from rota to rota glide, this dyna mode, it should be the half of your RPM adjusted. It's a cool way of checking that the system, RPM system is correct. If you set your RPM of 140 to 160, say it should be on 80 on rota glide. So it's the rough way of checking this RPMs. Again, advancement. As you can see from this thing, you'll check the advancements. That this is free movement. There is no friction in it outside the body. Because when you are in the vessel, you have to advance the burr like this. So there should not be any friction in it. We'll check the advancement of this. And then the wire. If you see, this is the wire. Okay? It should be fixed. And how it is fixed? In this is a version. Okay? What's the mechanism of braking of car? When you push the brakes, it will stop. It's reverse here. The brakes are on now, but when you push it, now the brakes are off. Now the wire is free. It's a brake release button. It's a brake release button. Okay? So, and then there is a fixer like this. You will put it on the tip and then insert this here. So now the wire is fixed. And what's the reason behind it? Your distal tip of the wire is in the distal vessel. Okay? When the rotations are being done, if the wire is not fixed, it will start moving like this. It can knuckle, it can do perforation, it can do anything. So, wire should not be rotating while your rotor is rotating. So it is fixed. So this draw is important. Practically, इसको दो modes कहते हैं. One is the rotor mode cutting your current. Once you are doing it, in the corner, so Michelle कहते हैं कि whenever you are doing the procedure, it should be in the rotor mode. Follow your wire being fixed. Otherwise, you will just dissect or whatsoever. And whenever you are in the corners, you should be in the rotor mode. And whenever you are retrieving in the guiding, etc., it should be in the diagonal. थोड़ा तो क्या आप लूज करते हैं क्योंकि जब आप रिट्रीव कर रहे हो तो उसमें आरपीएम वो जो आपका स्पीड जो है वो भी कम हो जाती है बट इन कॉर्नर्स इट शुड ऑलवेज बी इन द रोटर मोड एंड इट शुड बी फिक्स्ड वापसी पे जो है आपको बताएगा मतलब कि किस तरह है जी okay. While doing the rotational atherectomy, confirm this drip is on. This is for the solution we have made, the rotaglide solution we have made by this, and it's so if we don't have pressure pump, but we will use the BP cup. When you inflate the BP cup to its max, okay, then there is pressure, and through this pressure, this fluid is running in the system. Confirm. I have already told you talk. Use packing movement. This is very important. The packing movements are like this. This is you are moving like this, okay. The packing movement is like this. You are hitting it, but you are not trying to go through it on each time like maintaining pressure. No, you should not maintain a pressure till you go. Don't be panic. If it's not crossing the limb, don't be panic. Just do the packing thing. Like you're moving forward and backwards, moving and forward and backwards. Give vessel a time. Then it's because always remember it's modification. It's not breaking something. You're not going to break anything. You should not. It's just the modification. Do packing movements. Hit back, hit back. After a few runs, you will see that it will go through it. So if it's not crossing the line, don't panic. Come back and wait. Then. लीन के साथ prolonged contact इसका होगा तो there are chances of it's woodpecker जो bird होता है उसे मारता है trees को. Exactly. जैसे उस तरह मार के आते हैं इसको. Don't let it get fat. रोटर करीबन 10 से 15 सेकंड्स का unless के deceleration motor 5000 होगा. Make sure आप सबसे important exercise आप ये करें जो packing movements आप कर रहे हैं. याद रहे एक आप आगे जा रहे हो और एक वापस आ रहे हो. आगे जा रहे हो वापस आ रहे हो. वापस ये तो 10 से 15 सेकंड तक जो देना है उसकी प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए. वो जो आपका जो फुट पैडल है बाद में तो हैंड होता हो गया. आपने जो उसको लिफ्ट तब करना है जब आप वापस आ जाओ.
go there. So you know, once you go there, you are in the league. और हाँ अगर आपने वो उठा लिया ना वहाँ, so that is the chance कि आपको rotation रुक के वहाँ start हो जाए. So always from the healthy segment, go to this, that's it. और वो नीचे आपने वो उसको दिया, आपने press किया और उससे rotation से आपके 160 की चल रही है. तो आपने जब वापस आएगा ना healthy segment, तब आपने पाँव उठा. If you do it like this, और इधर आपने पाँव उठा लिया, तो then you are stuck in the lead, and there are chances of stuck पर. तो वह गलत मसला बन जाएगा. So इस चीज को आपने पैकेज मूवमेंट से सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैंने देखी हुई है कि लोग जो है एक्सप्लेन करते करते गलती से जब पैडल से पाँव उठा देते हैं ना वो sometimes they are in the lead, sometimes they are lucky कि they have got to get away with it, but जिस पर बदलती का 1.25 मेरा का होता है get stuck. और खास तौर पे इनिशियल रन्स में बिकॉज हम लोगों का रिफ्लेक्स होता है कि जब भी ऐसे खतरा तो हम पीछे आते हैं, तो जैसे हम पीछे आएंगे रिफ्लेक्सली हमारा पाँव वहाँ से तो आपने जब भी करना ना, अभी व्हाट आई ऑलवेज से इज कि आप जब केस हो रहा हो आपके जो सीरीज है हमेशा उनके साथ पहले असिस्ट करो. और जो मेरे साथ थे और सब जो हमने भी किया वो ये था कि when we started कि आपका जब केस हो गया केस तो आपको बाहर निकल जाए सारा सिस्टम वो आएगा then you फिर वो you can have get that great data आप दे और 6 ऑपरेटर्स जो है अच्छी you should see कि किस तरह आप जा रहे हैं, किस तरह जा रहे हैं, पेशेंट को आप उठा के मतलब वो सारी चीजें एक्सेप्ट करके आपके कॉलेज में जा रहे हो, अदरवाइज यू कैन सी एवरीथिंग जो आपको बदल बता रहा है हैंड्स ऑन आपको दे दैट्स द बेस्ट वे टू डू इट. उस पे आपके रिफ्लेक्सेस या फिर 10-15 सेकंड्स पे जाना है और पेडल आप एकदम लिफ्ट करना है once you are back. जी हर स्किल को लर्न करने के लिए स्टेप्स होते हैं जिसके स्टेप 1 पे आप बैठे कि यू लर्न अबाउट इट, यू रीड अबाउट इट एंड गेट द नॉलेज. नंबर 2 पे यू गो एंड ऑब्जर्व इट. थर्ड पे यू असिस्ट इट. फोर्थ पे यू डू इट अंडर कवर ऑफ समबडी. फिर आप उसके बाद 5वें स्टेप इफ यू फॉलो द लर्निंग कर्व तो उसमें आपके फंसने के चांसेस कम होते हैं और आप डिस्करेज नहीं होते और आप एक स्मूथ सेलिंग चलती है. सो हैविंग अ वेरी गुड साउंड background knowledge is very important. Good observation is very important before you step in. और उसमें ये कि जब केस कर भी रहते हैं यूजुअली इनिशियल रन्स जो है हम करते हैं once we know कि स्टक होने का चांस कम है, you know once we know कि हमने डिफर की उसी कार भी रास्ता बदला है कि just going on and putting another wire and then starting then we encourage our residents to assist our real time आप उसको जब पॉलिश से कर लो रियल टाइम उससे रिफ्लेक्स का आपको आएगा कि और ये जो बैक मूवमेंट है खास तौर पे सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि कीप ऑन डूइंग इट एंड ऑलवेज बड़ी सपोर्ट तब आएगा once you are back in the concept. Another important thing is avoid deceleration. This is very important. Deceleration means कि आप ड्रिल वाली मशीन देखें ना, जब वो ड्रिल कर रही होती है और फंस रही है तो उसकी आवाज थोड़ी चेंज फ्रॉम आपको आवाज से होगा. The operator will be looking at the rotor, but this operator should be hearing the sound of the rotor, and the assistant should be looking the decelerations. And they both know that the set RPM are 140 to 160. If anything more than 20, like it's coming down to less than 120, you should be alarmed that you should come back to your normal vessels and stop, have a break, check. Oh, is there anything wrong with the DN? Is there anything wrong with the pressure here? This is very important, the nitrogen pressure. Because the pressure, if the pressure is less than 600, the deceleration will not be as powerful as they used to be. So check your system. Listen to the sound of deceleration for operator and for assistant. See the RPM on here. The RPM will be displaying here. Two short runs. As अगर आपका ज़्यादा कॉल आ रहा है पेशेंट का तो maybe टाइट लीविंग में भी deceleration आएगी ना, the limit is very tight. तो उससे बजाय कि आप एक ही रन में ठीक है उसको ठीक करना है, खोल के छोड़ना है. 5000 से ऊपर आपका चला जाए ना तो एक तो आवाज भी आती है 5000 से ऊपर चला जाए तो you should not hang on there. पीछे लाके थोड़ा सा उसको दस देना. डेब्रिस जो है थोड़ी आगे निकल जाएगी, ECG वगैरह सारा चेक कर ले, प्रेशर स्केल को डिप करते हैं, they are back, try again. मतलब स्टेप वाइज आप करें, don't do it in a one sitting में मैंने एक ही दफा करके आया. तो आहिस्ता आहिस्ता वो बिल्कुल कट ऑफ है, तो उसके आपका जो ड्रॉप जो है वो कम आएगा.
जो अपग्रेड हम दीवार में करते हैं उसमें हम जोर लगा रहे होते हैं और हमें पता होता है कि ड्रॉप आएगा तो ड्रॉप आता है। इसमें भी अगर आप जोर लगाओगे तो ड्रॉप आएगा, जोर नहीं लगाना, नेवर पुश, आराम से उसको अपना रास्ता बनाने करने दो, जितने अटेम्प्ट लगे 20 लगे 25 अटेम्प्ट्स करने को दोस्तों, ऑलवेज गेट बैक, लेट इट मेक इट स्ट्रेट। अच्छा मतलब वो वैसे है ना कि आपने ठीक था लेस देन 30 सेकंड्स यूजुअली हम 15 सेकंड, दिस इज व्हाट आई हैड, ओके, और जोनी के 15 सेकंड अगर आपको ड्रॉप किया 5 सेकंड के बाद 11 जस्ट कम बैक आफ्टर इवन 5 सेकंड्स अगर आपको कूल डाउन तो सिस्टम को कूल डाउन होने से 5000 से ऊपर का ड्रॉप आ रहा हो खासतौर पर 10 तो उसको कोई तो लोग के साथ बेशक वो 5 सेकंड ही क्यों हो, डोंट फिक्स योरसेल्फ कि आपने 15 सेकंड करना है। और जब भी ड्रॉप आए दूसरा अपने रिदम को देखें, बिकॉज ड्रॉप आया तो कोई डेब्री आगे गया होगा और स्लो फ्लो करेगा, तो जरूर देखें कि ब्रेडिंग नहीं हो रहा, ब्लॉक्स तो नहीं आ रहे, अगर आ रहे हैं तो उनको मैनेज करें, उनको सेटल होने बिफोर गोइंग अहेड विद अनदर रन, वो सेटल हो तो फिर अगले दिन ओके। एट टाइम्स अगर स्पेसिफिकली अगर आप 6 फ्रेंच के साथ जा रहे हो तो अच्छे टेस्ट इंजेक्शन नहीं दे सकते वैसे, तो फिर आपको रिदम बता रहा होता है कि ब्रेडिकार्डिया स्लो फ्लो हुआ, ब्रेडिकार्डिया हुआ, 7 फ्रेंच के साथ हो जाते हैं टेस्ट इंजेक्शन, 6 फ्रेंच से बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा, सबसे बड़ी बात है वो जिस तरह वो बात कर रहे हैं इस्लाम के, यू नो हम बिगिनर्स को हम कहते हैं कि आप 7 फ्रेंच से स्टार्ट करने ज़्यादा बेहतर है, तो थोड़ा सा आपको सपोर्ट बेहतर मिल जाती है और ईज उसके अंदर थोड़ी सी ज़्यादा है, आपको चेक इंजेक्शन अच्छी आती है, प्रेशर मॉनिटरिंग अच्छी और प्रेशर मॉनिटरिंग, सो ज़्यादातर लोग जो स्टार्ट क्योंकि आपको ऑल 1.25 6 पे तो बहुत सारी रहता है, 1.5 में थोड़ा सा इंजेक्शन जो है क्वालिटी अच्छी जाती है, बट मोस्ट ऑफ द ऑपरेटर्स which I have asked जो है वो usually in the early part they start with 7. Exactly, ये सर ने बिल्कुल ठीक है। For initial 20 patients use 7 because whatever you will be required for bailout, for covered stand, for anything, तो चीजें आपको तो 7F में आपके लिए चीजें बहुत easy हैं as compared 6F में बाद में पैनिक करके चेंज करना है। Short runs सर ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर दिया, should not be more than 15 to 20 seconds, then stop, let the vessel breathe, let the rhythm settle, let the patient take some और in between at least 30 seconds का break मिले, और specifically अगर deceleration हुई है फिर तो at least 30 seconds का लाजमी उसमें break दें, देखें अपने पूरे सिस्टम को चेक करें, पेशेंट को देखें, उसके rhythm को देखें, continue until blood passes easily through the vein. So it doesn't matter अगर आप 1, 2, 3, 4, 5, it is not the number of runs, it is basically packing movements, और जब आपका रन चला जाए easily, after that then again stop and then finally take a polish run. What is the reason of this polish run? Suppose अगर आप शीशा लें और उसको pieces करें, अगर एक large pieces हैं तो वो चुभेंगे, लेकिन अगर आप उनको बिल्कुल ही क्रश करते हैं तो पाउडर बन जाएगा, ठीक है? तो पॉलिश रन इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप उसके बाद एनसी करेंगे जो स्मॉल पीसेस कैल्शियम के हैं लाइक क्वांटिटी वो वेसल वॉल से परफोरेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने वो बिल्कुल ही क्रश करके पाउडर बना दिया है तो दे वोंट डू एनी हार्म। सो पॉलिश रन इज इंपॉर्टेंट। पॉलिश रन का मतलब क्या है कि पॉलिश रन का मतलब ये है कि आपने उसको जब मूव किया वो इतना स्मूथ किया कि आप यू आर फीलिंग कि यू आर दिस मूविंग फॉरवर्ड रोटा आउटसाइड द बॉडी, दिस इज द पॉलिश रन। अगर आपको जरा भी रेजिस्टेंस आ रही है, कम बैक, कम ऑन द पैकिंग मूवमेंट। If there is no resistance, it's going like water, then it's a polish run. So final polish run is very important. Then it gives you confidence कि अब आपका लंबा स्टेट पे ट्रैक करेगा। इसी चीज में जो मेन टू डिसाइड की जो है मतलब इससे आपका जो पॉलिश रन प्रॉपर नहीं हो रहा है, कैन यू थिंक हियर एटीट्यूड चेंज द पर्सन, उस पे जो है बस And you need to upsize it. You know उसपे ना अपसाइज वही बात है, यूनिटली डिसेलेरेशन बट ऑब्वियसली यूनिटली आपको प्रैक्टिकल लीनियंस की तरफ ही जा रहे होते हैं, बट इट जस्ट डिपेंड्स यू नो व्हिच वेसल यू आर। अब जिसका लेफ्ट वेन में आप 1.2 से करोगे तो वहाँ कुछ भी नहीं बनेगा, यू हैव टू स्टार्ट विद एटलीस्ट 1.75, सो इट जस्ट डिपेंड्स व्हिच आर्टरी यू आर टचिंग, उसके हिसाब से आप करना। बट ऑब्वियसली कई दफा यू नो विद इवन अ गुड पॉलिश रन आल्सो लेट्स से 1.25 आप अल्टीमेटली जो है what and maybe पता स्लाइड exactly पता क्या नहीं, but usually what we recommend is कि आप जो है ना उसके करने के बाद 1.25 से अगर आपने कर दिया तो आप उन्हें बर्थ और स्वाइप ले जाओ और उसके साथ बैलून करें उसको प्री डायलेटेशन in presence of this rotaval position. Don't take that out.
क्योंकि कई दफा आपको महसूस होता है कि आपने बिल्कुल ठीक कर दिया, रोटा हो गया, डिसेलेरेशन भी हुई, सब कुछ हो गया और आप सब कुछ निकाल के वर्क पर स्वाइप पे चले, अब आपने एक बलून ऐसे लिया और फिर वेस्ट कर दिया, एंड दैट विल बी द रीजन कि अब आपको अपसाइज करना पड़ा, सब कुछ चेंज तो फिर वो सारी जो आपने वायर निकाली है, सो वो वी रिकमेंड इज कि आप जो है इवन ये रोटा वायर के ऊपर भी आप बलून लेके जा सकते हैं, उसके ऊपर या वर्क और वायर लेके विद द रोटा वायर इन पोजीशन आफ्टर योर फर्स्ट whatever the size of the bulb is selected, therefore 1.25 से आप स्टार्ट करते हैं, तो उसके अंदर आप करें और अपना एनसी बलून जो कि है उससे आप देखें कि क्या लेट से 2.5 2.7 है उसका वेस्ट if still there is a waste it means कि फिर आप अपने वर्क और वायर निकाल के रोटा वायर को करें, रोटा वायर तभी निकालिए when you are sure कि आपकी डायलेटेशन जो है पेटिकोट होगी। Yes, exactly. ये बिल्कुल सही कहा सर ने। Actually, एक तो angiography and this is now this concept is coming in the rota cut technique. What they do, they use 0.5 ratio bulb and after that they use a cutting balloon. Black modify हो चुका होता है, उसमें cracks आ चुके होते हैं, जैसे सर ने कहा, आप उसको cutting balloon से कर दें, तो वो एक बहुत अच्छा कार्य अचीव कर लेता है। And now this rota cut technique is economical as well. But in spite of using another 1 lakh balloon, 1 lakh bulb, use 20-25,000 cutting balloon, and this will do the thing because modification. कल आपने बल्कि देखा भी होगा, कल once we had a case yesterday, उसके अंदर उन्होंने IVL को combine किया था with the cutting balloon, available है आपको खास में बॉस्टन की है, इनको बॉस्टन वॉल्वरिन चल रहा है, वॉल्वरिन चल रहा है। but ये कि ideally तो यार ये कि if the patient can afford it, if you can upsize the bar, I think the system is there, you know, क्योंकि कई बार कटिंग बलून में वर्क नहीं करता तो it's not a 100% गारंटी कि आप कटिंग बलून वर्क करेगा, you know, तो it's always better कि आप upsize कर दें। जी, just few slides of a patient with calcified circumflex and just want to show the packing movements. Now these, just see, it was not crossing but he just pull back. उसने उसको push नहीं किया, उसने उसको पीछे कर दिया। Again one thing is very important. जब आप ऑपरेटर रोटा बार को फॉरवर्ड मूव कर रहा होता है, तो जो असिस्टेंट है और जो ऑपरेटर है जस्ट फोकस ऑन टू थिंग्स, द गाइड टिप एंड द डिस्टल वायर। यू सी द गाइड इज मूविंग बैक। ये इतना ना हो कि कुछ सब कुछ सामान ही बाहर आ जाए, लेकिन जब उसने देखा कि थोड़ा सा कुछ है उसने उसको पुल कर लिया। सो गाइड टिप एंड द टिप ऑफ द वायर, ये ना हो कि जब आप इसको पुल करें तो वायर टिप भी पीछे आ जाए। सो इन दोनों चीजों को जरूर कंसंट्रेट करें, जस्ट इग्नोर ना करें, क्योंकि हम जब इनिशियल स्टेज में जब करेंगे आप बार को ही देख रहे होंगे आगे जा रहा है कि नहीं, आप गाइड को इग्नोर करेंगे, लेकिन फोकस करें अपने गाइड पे। गाइड आपको बताएगा कि बार को कितनी रेजिस्टेंस आ रही है, आपको बार नहीं बताएगा, गाइड बताएगा, क्योंकि गाइड पीछे होना शुरू हो जाएगा। तो इस पे फोकस करें। बड़ा इंपॉर्टेंट है चीज। लेट्स टॉक ऑन द प्रैक्टिकल थिंग्स। आप जब ये कर रहे होते हैं, यू नो, आप देखें कि बहुत अच्छी मुझे वो उसकी एंगेजमेंट नहीं लग रही, और खास तौर पे जब क्या पार्शियली एंगेज्ड है, व्हिच इज नॉट वेरी गुड, यू नो। कई दफा ये होता है व्हेन यू आर डूइंग दैट, आप ये आपने एक्सचेंज कर लो कि आप ये छोटा वायर के ऊपर आ गया, एंड सडनली यू फाइंड कि ये वायर जो है ये पीछे आ गई है, इधर पहुंच के बैक और फॉरवर्ड हो गया। सो हाउ वुड यू टैकल? आपने वायर पीछे आ गया, आपने वो कह रहे हैं कि ये मतलब कह रहे हैं कि आपने दो चीजें देखनी है, गाइड एंगेजमेंट देखनी है, वायर की पोजीशन देखनी है। अब देखिए यहाँ वायर ऑब्वियसली इट शुड बी डीप सीटेड, इट शुड नॉट बी इन बिटवीन। यहाँ आपके पास so many times you find कि जो है आपकी वायर जो है ना वो खिसकती है, वाली वायर जो है दिखा रही है। एक्चुअली सर उस तरफ ले जाना चाह रहे हैं, मैं आपको टिप एंड ट्रिक में इधर ही से दिखा रहा हूं। आप नॉर्मल जैसे ब्लून एंजियोप्लास्टी कर रहे हैं या स्टेंट कर रहे हैं, आपका ब्लून वायर से आगे भी चला जाए, डजंट मैटर, आपको वापस पीछे जाए, इधर कुछ फर्क है। ये जो आपका सारा सिस्टम है ना, ये बार ये ऐसे बना हुआ है, इसके अंदर जो होल है वो O09 के लिए कंपैटिबल है, इस सेगमेंट के O14 है, आगे O14 है। अगर ये बार आपका इसके करीब आएगा तो इस पे स्टक हो जाएगा वायर के साथ, ये इंटैंगल हो जाएगा, इसका सपोर्ट बनेगा। सो यू हैव टू टेक केयर कि ये जो भी आप रिलेट करें इसके करीब ना करें, ये वायर दूर होनी चाहिए। अगर ये पीछे हो रही है तो यू हैव टू पुश द वायर फॉरवर्ड। अगर आप इस वायर के करीब रिलेट कर रहे हो, इसके करीब आगे तो स्टक हो जाएगा। तो मसला ये है जो ट्रिक मैं बता रहा हूं, बरगर वो वापस ये वायर जो आपने फिक्स की है रोटा की, मतलब आप बार को पीछे निकाल लिया, द वायर इज नॉट गोइंग टू गो अवे। मतलब आम वायर को तो होता है पीछे आएगी, आप पुश कर दो वायर वापस चली जाएगी, हियर द वायर वोंट गो अवे, इट स्टक। ब्रेक लेंगे
break immediately. So what we do is कि obviously मैंने कहा था whenever you take this rota in, you know, आप इसको जो है ये रोटावेटर जो है आपका ये अंदर आपने लेके जाना है जो it always has to be in a rota mode. मतलब ये कह रहे हैं से आप यहाँ कर रहे हैं ये आप लेके you know नीचे दो बटन है अभी आपको दिखाएंगे एक रोटा मोड है और एक डायनामाइट मोड है. रोटा मोड पे आपकी usually आप 140 to 160 टूल तक but safe is 160 तक 170 तक आप कर रहे हो. तो रोटा मोड के अंदर जो है वो सारा काम आप कर इसमें कर रहे हैं. बट वंस यू आर और इधर जो है ये दिस वायरस फिक्स्ड. अगर आपने डायना मोड में किया तो यू नो इस तरह करेंगे. सो व्हेनेवर यू आर इन द कॉर्टेक्स यू हैव टू डू इट इन द रोटा. बट व्हेनेवर यू आर रिट्रीविंग इट obviously it has to be in the dynamic mode. उसके अंदर आपकी जो है 60 to 80,000 के ऊपर आपकी स्पीड है और डायनामिक मोड जो है वो ऑन होगा. प्लस अल्टीमेटली रोटा मोड बट विद द डायनामिक लाइट बटन जो आपको पहले करना है उसमें ये क्या आपका ये वापस बेल्ट के अंदर आ जाएगा और उसके अंदर जो है आपकी वायर जो है उसका लॉक जो है करके फ्री कर देंगे एंड देन यू कैन एक आपके जो वो कर देंगे. सो व्हाट व्हेन द वायर इज नॉट देयर क्योंकि अगर आप इसमें वायर बहुत सी दफा होता है तो वायर वाली पीछे आएगी. Then sometimes with the rota and the rider जो है हम डायरेक्ट लाइट बोर्ड पे जाकर उसको करते हैं तो 10 वायर becomes free और खुद ही आप पुश कर रहे हैं. जी पर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि किस तरह आपने उसको वायर को करना है एग्जैक्टली. आपने वायर को पुश नहीं करना है व्हेन रोटा बर इज इन द वेसल जो सर ने कहा है. आप उसको कैथेटर के अंदर लें डायनामिक लाइट मोड ऑन करें अनलॉक करें और उसको पुश कर दें. जब डायनामिक लाइट मोड ऑन होगा अब बड़े इंटरेस्टिंग है व्हेन यू डू इट ना आप खुद नोट करेंगे कि आपको फिर मैनेज करनी पड़ेगी. वो वायर तो आगे चल जाएगी ऐसी ऐसी जगह चली जाती है जहाँ पर इधर नहीं जा रही है छोटी वैसे जस्ट गॉट माय पॉइंट. दिस इज वेरी प्रैक्टिकल पॉइंट क्योंकि मैंने कहा कि उससे लगाया हुआ था इत्तेफाक से. मैंने कहा आपको दोनों चीजें बता दो. वंस यू आर देयर इट हैज टू बी इन द रोटा मोड इधर वायर फिक्स्ड है और वायर पीछे बहुत सी दफा होता है कि वायर करते करते ना आप करते करते वायर पीछे आ गई सर. अब दिस इज नॉट अ नॉर्मल वर्क पास वायर. ये वायर इस कंसोल के अंदर होके नहीं है. आप इसको वैसे पुश करने की कोशिश करोगे पुश करेंगे एक मैन्यूवरेबल भी फिक्स है. ब्रेक भी रिलीज करके फिर डायनामिक लाइट यस हां या ब्रेक रिलीज करके ब्रेक रिलीज कोई ना उसको डायरेक्ट लाइट मोड पे जाएगा ना. ब्रेक रिलीज करके वायर को फ्री करते हो आप उसको फ्री करेंगे. ठीक है. डायरेक्ट लाइट मोड मींस कि आप ब्रेक को फ्री करेंगे और फिर आप जो करेंगे और उसके बाद फिर वो आप उसको प्रेस करेंगे ना वायर करके ना छोटे छोटे बस के अंदर चल जाएगी. सो इट हैज टू बी अ डीप सीटेड वायर. मैं इसलिए कहता हूं कि इसके कारण यू ऑलवेज हैव टू लुक फॉर द सपोर्ट इन द वायर पोजीशन. और हर जो इनिशियल ऑपरेटर इवन इन माय एक्सपीरियंस मेरे साथ ज्यादा प्रॉब्लम यह थी कि वायर पीछे किसी चली जाती है और जब लिएगा उसको जो करेगा वो जितना पीछे आ जाएगा तो सपोर्ट आप यूज करोगे उतना कॉम्प्लिकेशन का चांस. सो इट हैज टू बी डीप सीटेड. जी same question started. Avoid deceleration ये हमने बात कर ली है. Keep atherectomy duration less than 15 seconds ये भी हमने बात कर ली है कि इसको मैं avoid करने के ना. Pause between the runs ये बहुत important है कि वो heat ना हो जाए, local injury ना हो जाए, stuck ना हो जाए वहाँ पे. Pause बहुत important है. Slow flow है, no reflow है, वैसे तो breathing time मिल जाता है. Another patient. These are the packing moments. और इसमें आप देखो वो लेफ्ट पेन है तो आप बैठ के लगा रहे हो. लेफ्ट पेन्स और उस एरिया में तो वैसे ही आते सेल्फ पेन से कम विद चलेंगे क्योंकि सेल्फ पेन पे इसलिए भी कह रहा हूं पेन में ये होता है कि लेट्स से कि आपने वो कर भी लिए बाद में आपको जस्ट टू ट्रैक द balloon स्ट्रेट आपको सपोर्ट की जरूरत पड़ जाती है. At least anchoring balloon technique which we have कर सकते हैं. These are usually calcium questions. आप क्वेश्चन दे सकते हैं. So after doing this, check for complications. You will do the injection, see any perforation, any dissection, any branch closure, any slow flow, no reflow, pressure drop, heart rate, everything. Replace rotawire with workhorse wire. Prepare lead, yes. After rota, please do NC implant to one side. And then deliver stent. Complication.
एक मिनट सर कॉम्प्लिकेशंस को छोड़ दें. Let's बदर वहाँ खड़ा है क्योंकि obviously let's go step by step. क्या आपका पूरा इक्विपमेंट क्या पड़ा हुआ है? सबसे पहले ये देखिए ये क्या है? आप जाके डेमोंस्ट्रेशन आप दे लें, कॉम्प्लिकेशन हम बाद में करें. देखिए डेमोंस्ट्रेशन फिलहाल ये हम आपको देते हैं कि इकट्ठे आप चलेंगे ना तो आपको इसको नहीं समझ आएगा. पहली बात है कि इसके अंदर क्या है, इसकी कैपेसिटी क्या है और इसके अंदर क्या प्रेशर होना चाहिए. ये बताओ. ये सिलेंडर बेसिकली नॉर्मली इसके अंदर नाइट्रोजन होती है, एयर भी हो सकती है लेकिन वो नाइट्रोजन है बेहतर. इसके ऊपर प्रेशर गेज लगी हुई है तो इट शुड बी मोर देन एटलीस्ट 600 इसका प्रेशर होना चाहिए kPa. इफ इट इज लेस देन 600 ये प्रॉपर वो नहीं करेगा. तो किसी का इलाज ना करें, ऑपरेटर को जाके देखा करें कि इसका प्रेशर कितना है. और क्योंकि ये जो इसका प्रेशर है ये इस कंसोल पे अटैच होता है, ठीक है, और ये कंसोल आगे प्रेशर उसको रोटाब्लेशन को फिर उसके लिए एथरेक्टमी के लिए ट्रांसमिट कर रहा होता है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो सबसे पहली चीज जो हमारे पास मतलब ह्यूमन एक्सपीरियंस आइडियली तो 1000 तक भी बट ये कि अगर जरा सा 500 से कम हो रहा है ऑलवेज कॉल द प्रोसेस पीपल की आके इसके अंदर बैठे हैं. तो आपके घर सारे हॉस्पिटल में नाइट्रोजन होती है, ठीक है ना. बट ये कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि गेजेस लगी हुई है, ठीक है. और उसके बाद जो है डिलीवर जो है ये दो सिलेंडर के पास सॉरी दो गेजेस हैं. एक गेज सिलेंडर के अंदर का प्रेशर यस यस और एक आपको कंसोल में क्या ट्रांसफर हो रहा है वो प्रेशर. अच्छा अब दो गेजेस जो है जो सिलेंडर का जो है ना हम हमेशा बैकअप में कहते हैं कि अच्छा प्रेशर होना चाहिए, ठीक है. 500 का 1000 हो जाए बेहतर. बट दूसरा है कि आपका अंदर कितना जा रहा है. 110 प्रेशर वो कितना होना चाहिए? 110 kPa इनका यूनिट्स इज 110. तो आपने जो है पहले ये देखना है कि इसके अंदर क्या कैपेसिटी है. कम से कम 500 इज द मिनिमम, 1000 तक वो बेहतर है. फिर दूसरे में देखने के वहाँ से यहाँ कितना ट्रांसफर हो रहा है. तो इट शुड बी 110. इससे कम में नहीं चलेगा क्योंकि आप देखो काम वहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ आके इधर है और यही जो है प्रेशर आगे ट्रांसमिट होगा तो उसकी रोटेशन जो है उसके थ्रू आएगी. नाउ लेट्स गो टू दिस. ये जो सॉल्यूशन है जिस तरह आपको बताया कि रोटाक्लाइड है, इट इज एक्सपेंसिव एज वेल और अवेलेबल भी नहीं है. सो उसकी जगह जो है कॉकटेल हम अपने खुद बना लेते हैं. सो इसमें दो चीज़ें कि किस तरह बनाते हैं और दूसरी चीज़ है कि कितना प्रेशर इसके अंदर हमें देना है. क्योंकि वो जैसे वो ड्रॉप आता है ना तो उसके अंदर पहला स्टेप जो होता है डायरेक्ट, सेकंड वाज रोटेशन, थर्ड वाज जो है एडवांसमेंट एंड फोर्थ वाज द बाय. सो पहली बात ये है कि आप रोटाक्लाइड तो यहाँ अवेलेबल नहीं है. अगर होता भी तो बहुत एक्सपेंसिव होता तो जो ब्लास्ट है. तो 1000 cc सेल है एंड यूजुअली द कॉकटेल व्हाट वी मैन्युफैक्चर इसके उसके अंदर 2 cc हम मेंब्रेन देते हैं. दैट इज 10,000 यूनिट्स ऑफ दिस हेपरिन और 10 मिलीग्राम जो है वेरापेमिन हम उसके अंदर डालते हैं और 10 मिलीग्राम जो है आइसोलेट ये नाइट्रोनॉल जो है. तो 10 मिलीग्राम ऑफ दैट, 10 मिलीग्राम ऑफ वेरापेमिन एंड दिस 10,000 यूनिट्स ऑफ हेपरिन ये करके एक रफली कॉकटेल है. बेसिकली मकसद क्या है कि ऑब्वियसली ड्रिप चल रही है ना. बेसिकली जब आप उसको कर रहे हैं तो दैट व्हाट इट्स कॉन्टिन्यूअसली बीइंग फ्लश्ड. तो उसके अंदर दो वेजोडाइलेटर्स हैं इन फॉर्म ऑफ वेरापेमिन एंड दिस GTN और ऑब्वियसली हेपरिन एज अ एंटीकोगुलेंट. ठीक है. तो पहली बात तो ये. दूसरी बात ये है कि इसके अंदर आपने कॉकटेल बना रही है तो कैसे नहीं छोड़ रहे ना. मतलब ऑब्वियसली आप देखिए प्रेशर का प्रॉब्लम है और यूजुअली 180 के करीब या 200 के करीब हम मांगते हैं कि इतना जरूर आप प्रेशर दें. ये नीचे आपको नजर आ रहा है. ठीक है. अब ये दो चीजें होगी तो आपका 600 500 से 1000 तक आपको सिलेंडर को चाहिए. ट्रांसपोर्ट प्रेशर जो है 110. आप दोनों गेजेस आपको बदल स्टेप बाय स्टेप दिखाएगा तो फिर उसको इधर मैंने आपको बता दिया क्योंकि ये स्लो फ्लो जो कॉर्नरी फिनोमेना है वो तो आप कैथेटर से भी इंजेक्शन करके बेहतर कर सकते हो. सो एक्चुअली होता ही है जैसे साइकिल के आपने देखा ब्रेक सिस्टम जो होता है उसमें एक तार होती है जो ब्रेक तक जा रही होती है और उस तार के ऊपर एक प्लास्टिक ट्यूबिंग चल रही होती है, दरमियान में ग्रीस की लुब्रिकेशन. इसी तरह आपको नहीं ये नहीं खा सकते. ये जो रोटा बर है हमारा आगे डायमंड बर वो एक मैकेनिकल आपसे कहने के शैफ्ट के साथ लगा हुआ है. पूरी की पूरी शैफ्ट घूमती है तो आगे बर घूमता है. अब ये पूरी शैफ्ट जो है ना ये वैसे अगर किया हो कि बर के साथ जा रहा है तो सारी शैफ्ट दरमियान में इंजरीज कर सकती है. इंजरी से बचाने के लिए इसके ऊपर भी प्लास्टिक ट्यूबिंग है. शीट सिर्फ अगला वाला हिस्सा एक्सपोज है थोड़ा सा, बाकी सारा प्लास्टिक एक कवर के अंदर है, शीट के अंदर है. अब जब ये वायर घूमेगी उस शीट के अंदर तो फ्रिक्शन पैदा होगी, हीटिंग पैदा होगी. ये लिक्विड रन करता है इन दोनों चीज़ों के दरमियान, प्लास्टिक शीट कवर में और ये जो शैफ्ट है बर की, इसको लुब्रिकेट करता है और हीटिंग होने से बचाता है. और साथ में इसमें जो मेडिसिन डाली हुई है
वो हमें क्या फायदा देते हैं कि वो स्लो फ्लो कम करते हैं। कंटिन्यू, अभी आप आगे आएंगे तो आप और करना देखना। before we go ahead, मतलब अब बता So if मेरे को इनमें नहीं करना, इनमें नहीं करना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। थ्रोम्बस Acute MI बराबर ठीक है, dissection yes, Loop tortuosity. extreme tortuosity you have to be very cautious। और इंस्टेंट के अंदर थोड़ा सा प्रिकॉशन है आपको फ्रेशली प्लेस्ड स्टेंट अच्छी चीज जड़ानी है करनी, स्टेंट अंदर सारा End of life। Within 3 months avoid करें। एंडो 3 layers का एंडो ISR उसमें कर सकते हैं। फ्रेशली प्लेस्ड स्टेंट के अंदर आप अपडेट और करने जाओगे तो और कोई ड्रग पेशेंट ले रहा हो नहीं करना चाहिए। और कौन सी ड्रग्स हैं? एंटीकोगुलेशन पे ऑपरेशन, पेशेंट को आपने रिसेंटली ग्लाइकोप्रोटीन 2B3A इनहिबिटर देना पड़ा, पेशेंट को रिसेंटली थ्रोम्बोलाइज करना पड़ा, पेशेंट नोवल एंटीकोगुलेंट पे है, तो इसको अवॉइड करना चाहिए पूरा पेशेंट। और अगली चीज है जैसे इन्फेक्शंस है आपके less than 30% of it you should be highly cautious, less than 30% and last remaining viable territory बाकी सारी वेसल्स खाई हैं और सिर्फ लास्ट आखिरी वेसल जिस पे काम चल रहा है तो that would be very risky unless you have got very good hemodynamics for the shape of do you have slides with this जहाँ ये कंसोल वाला की जो डॉक्टर सर आप इसमें अपने इनपुट दें, आप लोग उधर आगे लास्ट के वेसल असद खान को आप सब जानते हैं, he is the chief of the traditional teaching is that if you have got the last remaining vessel which is perfusing, avoid root ablation in that case. Yeah, we preferably should not. Like in sometimes if it's the last remaining vessel and that's the only thing that can be opened, then in those cases probably the best thing is you have some sort of hemodynamic support, like Zubam or IV Pella or something. But we can still do it probably with shorter burr runs, that you try to avoid slow flow, undersize the burr a bit. So these 3 or 4 things are predictors for slow flow. Oversizing of burr, speed of the burr. So if you go more than 180, that is shown to create bigger and more particles that will cause more slow flow. So avoid those and then do 5-second runs rather than longer runs, so that you don't occlude the vessel for too long. But you have got fix for this. Another important no-go area, traditional no-go area for root ablation is vein graft. No, yeah, never. उधर कभी भी नहीं करते। You never. Vein graft। So if Never you do need it। to do something, then laser is the safest option for the vein graft। अच्छा अब जो है ना हम आपको complications वाला portion जो है Asad is also here and we are such a player to have a very important part of it. उसके बाद once we are done with it, फिर आपको पहले हम वहाँ दिखाएंगे और फिर सब आपको कंसोल पे ला के और सारी चीजें एक एक करके हैंड्स ऑन आपको दिखाएंगे किस तरह मेजर हमने चीजें बता दी कि ट्यूबिंग किस तरह जा रही है और डू यू डू एंड देन यू डू एवरीबॉडी विल बी डूइंग हैंड्स ऑन जी so important complications, this is very important, it should be continuous, that's why we are putting some pressure on it if you don't have the infusion pressure in the pumps. How we manage it? Optimize blood pressure, flow, hydration, vasopressor, intra-aortic balloon pump, and use of intracoronary vasodilator, for example, nitrosin, verapamil, adenosine, and nitroprusside. So slow flow, it should not be there. Although it happens, specifically if it is RCA, dominant RCA, slow flow usually happens. Dissection, careful case selection to avoid excessive toxicity. You know, dissection normally occurs when we have taken out the, the phenomena of this differential cutting. Then differential cutting is not there, then although some dissections, micro dissections, they are there in the rota, but when there is spasm, when there is tortuosity, then the chances of dissection improves. So avoid further these runs if dissection identified. Maintain wire position and perform angioplasty stenting. This wire positioning is very important. So this, as sir mentioned, it's a nightmare if after this you have done atherectomy and the wire is out. No, it can be a nightmare. Perforation, commonly related to poor technique, oversizing of burr. Yes, oversizing of burr can cause excessive angulation and high speeds. They can cause. Standard technique. And you told them the optimal sizing for burr. Yes. Yeah. So standard technique for treatment of coronary perforation including this is cessation of anticoagulation as balloon tamponade, coil embolism and covered stent and then pericardial centricis as required. This is the treatment of perforation is there.
So one thing that we always did, like Zubair said, we did the highest number of rotation in US. So one thing that we always did before even wiring with the rotafloppy wire was a 1-to-1 size. NC balloon has to be ready on the table. Yes. You cannot be looking for it once perforation is happening. You will lose the patient. So the balloon has to be ready, prep on the table, and your workhorse wires tip has to be made and introducer. It should be inside the introducer needle. That you only need 5 seconds to get the wire and get the balloon up. So that जो चोरी करने से ना भागने का रास्ता आपका पहले Sorry, something went wrong. bail out और perf is the most hazardous one, right? The dissection तो भी time दे देती है. Perf is the one जिसके बाद time नहीं, तो you have to be ready for perf. बाकी सब चीजें you manage. Not to scare you away, these complications are not common. Very rare. If you are properly trained, you have choose your patients correctly, and you follow the right technique. These are not common. So in US, we used to run a rota course every 3 months, and the thing we would say to all the beginners is कि always get your hands moving on an LED. LED के अंदर slow flow कम होता है, जिस तरह उधर right में flow ज़्यादा है क्योंकि it has only 2 end vessels. LED में diags हैं, septals हैं, तो you get more flow. Slow flow भी कम है, plus usually the angle is very straight. Yes. और surge should be the last one you should attempt क्योंकि उसमें पहली एक 90-degree bend है, and then if you are going into an OM, there's a second 90-degree bend. So if you are starting, go for LEDs and don't bother about the diag and stuff. LED usually doesn't supply the AV node. Exactly. That's why so LEDs are the safest. Ischemia of the blocks straight. Slow flow is the commonest of this complication and the easiest one to manage. Yeah. तो इससे घबराने की बात नहीं. अगर आप प्रॉपर आप देख लें पेशेंट सिलेक्शन आपका ठीक हो तो नहीं होते कॉमन. लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हो तो इनका करना क्या है. You should be ready to manage them. Simply just explain in this way. If you get burr intact, then how you do it? Good. So once this slide is they finished their thing, I have a presentation on it, like 3 or 4 slides. I'll show you different techniques of what we do. You can continue with it. It's the last. Last slide. Yeah.